Assalamu alaikum. In today's lecture, we'll talk about basic financial statements. What are the basic financial statements? And generally, there is a requirement from the law, or you can say in Pakistan, SECP, Securities and Exchange Commission of Pakistan. They require companies should prepare annual financial statements. हर साल ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट. इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आल्सो प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हियर द वर्ड इज इंटरिम. एक है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वन इज इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दिस इज इंटरिम. Interim financial statements means that are being prepared for smaller period of time, that can be a quarter. Quarter means 3 months. As we have seen interim government in a setup that is for fewer time period. The interim financial statement means quarterly. Sometimes senior management can demand monthly financial statements as well. लेकिन मंथली हो, क्वार्टरली हो और इवन 6 months, we call it interim financial statements. That is optional, or that may be changes from company to company. Otherwise, on the whole, there is a need to make annual financial statements. These are the three main financial statements. All accounting, especially basic accounting, will revolve around these three financial statements. First is balance sheet, income statement, and statement of cash flows. And in this course of accounting, we are talking about companies accounting, not the partnership form of accounting or not the individuals. We try to deal with companies book of accounts. Company के level पे हम accounting करेंगे and we'll make different statements: balance sheet, income statement, and statement of cash flows. And what do we mean by balance sheet or income statement? That we will explain or discuss in coming slides. For example, balance sheet. बैलेंस शीट के बारे में याद रखेंगे, बैलेंस शीट is prepared at a specific date. For example, there is a company called Ghani Glass. Ghani Glass एक कंपनी है पाकिस्तान में that is listed on stock exchange. If I ask what is the worth of that company, what is the worth of total assets of Ghani Glass company, तो anybody can answer कि आज के दिन, आज की डेट, today the worth of Ghani Glass is, let's suppose, 9.62 billion rupees. Let's suppose worth of Ghani Glass today, आज के दिन 24 सितंबर को गनी ग्लास की वैल्यू है 9.62 बिलियन रुपीस. That is its worth. On the other hand, if I ask you what is the income of Ghani Glass, तो इनकम स्टेटमेंट के लिए इफ यू से, अगर मैं पूछूं कि क्या वैल्यू इनकम है गनी ग्लास की, 1 में से 15 लाख रुपीस, 1 में से 2 करोड़, 1 में से 1 बिलियन, डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं. Which is the right answer? 6 lakh, 15 lakh or 2 crore? इस तरह से we are not clear about it. Secondly, I'll try to explain it by one more example. Let's suppose we invite some businessman to a class, to a university. Let's suppose we invite one of the most prominent and the richest person in the Pakistan, Mian Mansha. Let's suppose we invite Mian Mansha to a university lecture hall, and he is giving lecture about the Pakistan's economy and the business growth potential. And one of the student, let's suppose one student, Ali Hamza, ask Mian Mansha कि मियाँ साहब हमें ये बताएं, what is your income? And Mian Mansha says कि my income is 10 lakh rupees.
अली हमजा ने पूछा कि व्हाट इज योर इनकम मियाँ साहब, तो मियाँ अमन शाह आज रिप्लाइड कि जी माय इनकम इज 10 lakh rupees. Is that answer right or wrong? Exactly. इनकम के लिए याद रखें, we always need a time period, range of time that may be 10 lakh rupees per day, per week, per month. इनकम का आंसर इनकरेक्ट होगा जब तक कि उसका टाइम पीरियड नहीं बताया जाएगा। लेकिन जब मैंने कहा गनी क्लास की नेट वर्थ इज 9.62 बिलियन, तो वो दैट कैन बी टोल्ड एट एनी टाइम एट एनी डेट। तो बैलेंस शीट के लिए जिसमें नेट वर्थ पता चलता है, कंपनी की एसेट्स का पता चलता है, दैट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी डेट, एट एनी स्पेसिफिक डेट, आज के दिन। लेकिन इनकम के लिए वी नीड अ टाइम रेंज दैट कैन बी जनरली अ ईयर। याद रखें कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी स्पेसिफिक डेट, आज के दिन की भी वर्थ निकल सकती है। लेकिन इनकम के लिए हमें पूरे एक साल का रिकॉर्ड चाहिए होगा और अ क्वार्टर। As what I was saying, you can see on the screen, period of time, income statement के लिए period of time, and see that for those students who are studying accounting for the very first time, see the word, two words are there in the right box, revenue and expenses. If I ask you to calculate income of any business, how we can calculate income? The simple answer to calculate income or profit is sales minus expenses, the very simplest formula. And all income statement is about this same simple formula. Sales कह लें या revenue कहें, एक ही बात है, revenue minus expenses, revenue में से expenses minus होंगे तो it will be income or we can say profit. तो इनकम स्टेटमेंट एज द वर्ड शोज, याद रखें, इनकम स्टेटमेंट से हमें कंपनी की इनकम का पता चलेगा, इनकम स्टेटमेंट से हमें कंपनी के एसेट्स का, कंपनी की लायबिलिटीज का नहीं पता चलेगा। इनकम स्टेटमेंट से वी कैन नॉट टेल कि हाउ मच अमाउंट ओनर्स हैव इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, इट विल नॉट बी क्लियर फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट से पता चलता है, बैलेंस शीट टेल्स अबाउट एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, कि ओनर्स का कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है इस बिजनेस में, दैट कम्स फ्रॉम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी स्पेसिफिक डेट, और इनकम स्टेटमेंट के लिए वी नीड अ पीरियड ऑफ टाइम। दीज आर द टू मेन स्टेटमेंट। नाउ द थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लोज के लिए भी याद रखें, वी नीड अ पीरियड ऑफ टाइम, कि कितने टाइम पीरियड में कितना कैश में इंक्रीज आया और डिक्रीज आया, and from by which sources, वो we will study in detail in the later part. As you can see, कि simple form में revenues result in positive cash flow, expenses result in negative cash flow. Positive cash flow को we can also say cash inflow, so don't confuse by the words. Positive cash flow का मतलब है cash inflow, negative cash flow means cash outflow, cash inflow and cash outflow. As I have just explained how we calculate net income, simply revenue minus expenses. The difference of revenue and expenses is net income or net loss. Income कहें, profit कहें, एक ही बात है. Remember, income, profit are the same things. Similarly, some companies have used the word sales and some may use the word revenue. आमतौर पे सर्विस इंडस्ट्री रेवेन्यू का वर्ड यूज करती है, और मैन्युफैक्चरिंग और जो गुड्स की काम कर रहे हैं वो वर्ड यूज करते हैं गुड सेल्स। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के भी वी नीड अ पीरियड ऑफ टाइम, अ मंथ, अ क्वार्टर और अ ईयर। अगर ये टाइम पीरियड शो नहीं करेंगे क्वेश्चन में तो इट मीन्स दैट इज अ मिस्टेक। कैश फ्लो के साथ टाइम पीरियड जरूर बताना है कि किस टाइम पीरियड की ये कैश फ्लो है, वेदर इट इज फ्रॉम
जनवरी 24 से लेकर दिसंबर 24 तक है। वेदर इट्स अ क्वार्टर, वी कैन से जुलाई 2025 से सितंबर 2025। क्वार्टर ऐसे चलते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा। जनवरी फरवरी मार्च इज अ फर्स्ट क्वार्टर, मार्च अप्रैल अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। स्टेट बैंक इवन इशूज मैनी रिपोर्ट्स क्वार्टरली वाइज। पाकिस्तान की इकोनॉमी की रिपोर्ट्स भी जनरली क्वार्टरली वाइज आती हैं। इवन कि एफबीआर की कलेक्शन के पाकिस्तान में कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, दे आल्सो इशू क्वार्टरली रिपोर्ट्स आफ्टर अ क्वार्टर। अभी नाउ दिस इज द मंथ ऑफ सितंबर, जैसे ही सितंबर एंड क्लोज होगा तो रिमेंबर इफ यू रीड द न्यूज़पेपर ऑफ 1st October, 2nd or 3rd October, you will see the quarterly reports of different departments. Now we will solve some numerical part. Everybody got a paper pencil. Now we'll try to solve some numerical part. Here is a company Vagabond Travel Agency and that is a business entity. और business हमें ये advise करता है, accounting भी ये advise करते हैं कि business entity should be treated as a separate entity from the owners. Owner is a different thing और उसका जो कारोबार है दैट इज अ सेपरेट एंटिटी। दैट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, वन ऑफ द यू कैन से गाइडेंस इन बिजनेस, इसको आपने एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे डील करना है। दिस इज द सैंपल ऑफ बैलेंस शीट। सम ऑफ यू और मैनी ऑफ यू आर सीइंग दिस काइंड ऑफ पेज और बैलेंस शीट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल एक नई चीज़ है। तो आई एडवाइस के everybody have a paper pencil and just to draw or just to make this balance sheet on your paper as you can see on the screen. Same it is ऐसे ही बनाएं। The point is you should be familiarized with balance sheet concepts. In balance sheet, see on the top of the sheet, इस पेज के टॉप पे we have a vagabond travel यानी कि name of the company should be on the top. Whether you are making any financial statement, income statement, balance sheet or cash flows, सबसे ऊपर name of a company, then name of the statement. Here it is balance sheet. It can be income statement, but यहाँ पे हम बना रहे हैं balance sheet. तो second is balance sheet, third is a date, December 31st 2002. तो see यहाँ पे कोई time period या time range नहीं है because we are making balance sheet and balance sheet can be prepared at any specific date. Or see assets are on the left side. You cannot write assets are on the left side. You cannot write it on the right side. Assets को हमेशा left side पे लिखेंगे. Format is very important in accounting. In some books you can see this is the left right approach. In some books you can see top bottom approach. कुछ जगहों पर आपको ऐसे भी मिलेगा कि ऊपर assets लिखे होंगे और डाउन साइड पे liabilities and owner's equity. That is also fine. Top bottom or left right, both formats are fine. अब assets में हमारे पास यहाँ पे है कैश, notes receivable, accounts receivable. Accounts receivable means that is receivable from clients or customers. जो भी हमने किसी से रुपीस या डॉलर्स लेने हैं वो accounts receivable में आएगा. Notes receivable are those receivables in which interest is also involved. Let's suppose we have to receive payment and the due time is 2 years. अगर किसी ने पैसे देने और वो कह रहा है कि मैं 2 साल बाद दूंगा, तो उसमें अगर इंटरेस्ट भी साथ इन्वॉल्व है कि जी 9% भी साथ आपने एज एन इंटरेस्ट देना है फॉर लेट पेमेंट, जितना भी टाइम इस पर डिले होगा, तो अगर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वी कॉल इट नोट्स रिसीवेबल और जनरली इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल. Supplies means short, you can say small kind of assets like accessories or electric bulbs or cleaning materials. Such things are called as supplies and that are written in assets. Land is an asset, building is an asset, office equipment is an asset. Office equipment 15,000, ये हो गए assets.
On the right side you can see liabilities and owners equity. Liabilities में notes, liabilities का simple word में अगर if I explain, रकम वाजिबुल अदा, अगर हम उर्दू में बात करें रकम वाजिबुल अदा, जो हमने किसी के पैसे देने हैं, जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, वो उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं. नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल. अकाउंट्स पेएबल मीन कि हमारे सप्लायर थे, हमने कुछ मटेरियल खरीदा है, परचेज किया या कुछ सर्विसेज लिए उनसे, अभी हमने उनका बिल पे करना है, इट मीन्स दैट इज अकाउंट्स पेएबल. नोट्स पेएबल वही जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा साथ. इंटरेस्ट मीन्स यहाँ पे मतलब सूद हम जिसे कहें, या इंटरेस्ट कह लें, मार्कअप कह लें. Salaries payable. Some people have provided the services, but their salaries are due for the last 2 months. Let's suppose पिछले 2 महीने की salaries नहीं दी, तो वो liability में आ जाएगा salaries payable. Total liabilities होगी 80,000. Now the heading is owner's equity. Remember balance sheet में we have 3 main headings. In every balance sheet 3 main headings होंगी और उसके बाद उसकी सब headings होंगी. First main heading is assets. ये सब headings है उसकी. Second main heading is liabilities, and third main heading is owner's equity. Owner's equity का ये मतलब है कि the liability of a business towards owner, कि उस कारोबार से ओनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है या कितना प्रॉफिट है जो उसके अंदर री इन्वेस्ट हुआ है. मतलब एक कारोबार लेट सपोज 10 करोड़ का है, तो उसमें से ओनर की तरफ कितना ड्यू है, तो वो आएगा लाइबिलिटीज में से माइनस करके. एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी. ओनर्स मींस मालिक, शेयर होल्डर भी कह सकते हैं, इन्वेस्टर भी कह सकते हैं. यहाँ पे ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं कुछ लोग, शेयर होल्डर्स इक्विटी भी इसको बोल सकते हैं. इक्विटी और डेट दो डिफरेंट टर्म्स हैं. रिमेंबर, किसी भी कारोबार में पैसे कहाँ से आ सकते हैं, देयर कैन बी मेजरली 2 ऑप्शंस. वन इज इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, मालिक के पैसे. सेकंड ऑप्शन इज डेट, के उधार आया कहीं से, बैंक का उधार हो सकता है, किसी इंडिविजुअल का उधार हो सकता है. तो डेट और इक्विटी. ओनर्स इक्विटी मींस कि इस बिजनेस में इक्विटी कितनी है, इस बिजनेस में ओनर की तरफ से कितना ड्यू शेयर आया हुआ है. तो देखिए ओनर्स इक्विटी में भी आगे 2 सब हेडिंग्स हैं. कैपिटल स्टॉक. ओनर्स इक्विटी में कैपिटल स्टॉक, याद रखें, कैपिटल स्टॉक मींस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस. कैपिटल स्टॉक, दोबारा सुने, कैपिटल स्टॉक इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट अ बिजनेस. सेकंड इज रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स का ये मतलब है कि द प्रॉफिट्स दैट इज अर्न्ड बाय द बिजनेस इन द कमिंग ईयर्स, बट द ओनर हैज नॉट विथड्रॉन, owner has not withdrawn those profits, those profits are still in the business circulation, it means that is reinvested in the business, उसको हम कहते हैं retained earnings. इसकी एक और easy और simple language समझें. हमने बहुत दफ़ा सुना होगा कि जी we have started business with 15 lakh rupees, now the mashallah worth is 2 crore rupees. अक्सर हमने सुनी टर्म कि 15 लाख से काम शुरू किया था, आज माशाल्लाह 2 करोड़ रुपए पहुंच गया. इट मींस कि दोज 15 लाख रुपीस कैपिटल स्टॉक था जो इनिशियल इन्वेस्ट किया, बाकी जो 1 करोड़ और 85 लाख है, 1 करोड़ 85 लाख, वो है रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी उसी में से कमाया और उसी से री इन्वेस्ट कर दिया, उसके अंदर ही बिजनेस ने ग्रो किया. तो ये फर्क होता है कैपिटल स्टॉक में और रिटेन्ड अर्निंग्स में. Capital stock is the initial investment by the owner, and retained earnings those earnings for the number of years that is reinvested in the business, उसे हम कहते हैं retained earnings. तो capital stock और retained earnings दोनों को मिला के वो बनेगा owners equity. और you can see there is also the basic rule or principle for balance sheet for students कि total assets should be equal to total liabilities and owner's equity. 300,000, right side पे भी 300,000. Remember every time always, हमेशा assets का total बराबर होगा liabilities and owner's equity के total के. If they are not equal, it means there is some error, there is some mistake in the balance sheet. तो इसके भी special marks होंगे कि दोनों आपने मैच करके simple balance लेकर आना.
तो अगर नहीं आ रहा तो देयर इज सम मिस्टेक, यू कैन रीवर्क ऑन दैट। तो एसेट्स का टोटल और लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी का टोटल हमेशा सेम होगा फॉर एनी बैलेंस शीट। एसेट्स को इन सम पैराग्राफ्स और बुक्स यू विल आल्सो सी कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज को कहा जाता है और ओनर्स के राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कुछ जगह वैसे भी लिखा होता है कि लेफ्ट साइड शोज एसेट्स एंड राइट साइड शोज कि हाउ लेफ्ट साइड इज फाइनेंस्ड। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, समझे कि हाउ लेफ्ट साइड इज फाइनेंस। फॉर एग्जांपल लैंड है 100,000, $1,00,000 की लैंड है, ये पैसे आए कहाँ से? बिल्डिंग है 90,000 की, पैसे आए कहाँ से? मतलब फाइनेंसिंग कहाँ से हुई? लेफ्ट साइड आर द एसेट्स एंड राइट साइड शोज कि ये जो लेफ्ट साइड में सारी चीजें एसेट्स हैं इसकी फाइनेंसिंग कैसे हुई है। तो वी कैन से कि टोटल एसेट्स है 300,000 के, 80,000 लाइबिलिटी से फाइनेंस हुआ है इस वक्त, और 220 जो है वो ओनर्स इक्विटी से इसको फाइनेंस किया हुआ है। तो राइट हैंड साइड शोज कि हाउ लेफ्ट साइड इज फाइनेंस्ड, एसेट्स, liabilities and owner's equity. I hope you all have completed its the balance sheet on your copies. Assets, I have explained you asset, but the exact definition you can see on the screen. Assets are economic resources that are owned by the business and are expected to provide positive future cash flows. इस लेवल पे you don't need to memorize exactly word by word. There is no need. Just get the concept. You should know what the asset means. Asset means economic resources that can provide future positive cash flows. If you understand the concept, you can make your own definition. No problem in that. And this is about assets, some characteristics of assets, and we will explain it in the next lecture.